Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 33rd lecture of this series of CPC and we are continuing with order 1. Now let's see order 1 rule 2. Where it appears to the court that any joinder of the plaintiffs may embarrass or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiffs to the election or order separate trials or make such other order as may be expedient. तो जैसे ही it appears to the court, the such joinder means what? Joinder of plaintiffs. Now suppose A and B are joined together against C. If this joinder is as per order 1 rule 1 means it was a proper joinder. Order 1 rule 1 apply हो गया है. And thereafter the court finds that the joinder may embarrass means what? Delay the trial. अब दोनों के इशूज कॉमन हैं लेकिन फिर भी द इशूज आर सच अदर इशूज आर सच विच आर डाइवर्स. मतलब कुछ इशूज एक आध इशू कॉमन है लेकिन बाकी के इशूज अलग अलग हैं और आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ट्रायल में डिले हो सकता है या कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है. सो इन दैट केस दे आर सेइंग दैट द कोर्ट में लीव दीज पार्टीज टू देयर इलेक्शन और कोर्ट में ऑर्डर द सेपरेशन ऑफ ट्रायल और पास एनी अदर ऑर्डर. मतलब कोर्ट में ऑर्डर कि ए और सी अलग कर लो और बी और सी की ट्रायल अलग कर लो. गो फॉर टू सेपरेट ट्रायल्स. लेट्स हैव टू सेपरेट ट्रायल्स. व्हाट इज मीन्ड बाय लीविंग देम टू देयर इलेक्शंस? व्हाट इज मीन्ड बाय लीविंग देम टू देयर इलेक्शन? मतलब कोर्ट उनको उनके कंसेंट के लिए छोड़ देगा. अब हो सकता है उनमें से बी अलग हो जाए सूट से, ए और सी का सूट चले, बी अपना सूट बाद में फाइल करे. तो इट इज बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट ए एंड बी एग्री दैट कि यू मे कंटिन्यू दिस सूट, आई विल फाइल अनदर सूट. या फिर दे आर नॉट एग्रीइंग देन द कोर्ट मे ऑर्डर दिस सेपरेशन ऑफ ट्रायल. अब देयर इलेक्शन मीन्स देयर चॉइस. तो ये आप लिख लो, टू देयर इलेक्शन means the court may leave the parties to their own choice. That is, by mutual consent one of the parties may withdraw his suit and file a separate suit. तो इसको कहते हैं to their election. जब कंडीशन यहाँ बस ये है कि ऑर्डर 1 रूल 1 यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, फिर भी द कोर्ट में ऑर्डर द सेपरेशन ऑफ ट्रायल. अगर ऑर्डर 1 रूल 1 सेटिस्फाई नहीं होगा फिर ऑर्डर 1 रूल 2 की जरूरत नहीं है. अगर ऑर्डर 1 रूल 1 सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर ऑर्डर 1 रूल 2 की जरूरत नहीं है. फिर तो जो मिस जॉइंट पार्टी है उसको ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2 में द कोर्ट विल स्ट्राइक आउट. हेयर द कंडीशन इज द रूल 1 इज सेटिस्फाइड. ठीक, तो इसी तरीके से आप ऑर्डर 1 रूल 3A पढ़िए. अब इसी तरीके से आप ऑर्डर 1 रूल 3A पढ़िए. Where it appears to the court that any joinder of the defendants may embarrass or delay the trial of the suit, the court may order separate trials or make such other order as may be expedient in the interest of justice. So here they are saying the court may order the separation of trial. If A has filed a suit against B and C, and if the court found that the suit becomes complicated, becomes complicated or delayed, then the court may order A and B and A and C का separate trial. Court may order A and B और A and C का separate trial. तो मतलब 2 सूट हो जाएगा, A and B अलग और A and C अलग. अब यहाँ पे भी ऑर्डर 1 रूल 3 सेटिस्फाइड हो रहा था. They were joined properly. Still, since it is a case of complication of trial, the court may pass order for the separation of trial. अब the question is to their election यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है? अब देखो, to their election अगर यहाँ पर लिखा होता तो कौन डिफेंडेंट है जो अलग नहीं होना चाहेगा? B कहता मैं अलग होना चाहता हूँ, C कहता मैं अलग होना चाहता हूँ. तो A का सूट किसके खिलाफ रह जाएगा? To their election means leaving to their choice.
तो एवरी डिफेंडेंट वांट टू गो अवे फ्रॉम द सूट, सो यहाँ पर द इलेक्शन द चॉइस इज नॉट गिवन टू द डिफेंडेंट, जबकि प्लेंटिफ में द चॉइस वाज गिवन। Whoever wants to separate, he will separate and the others will continue. But the defendants cannot be led to their choice. Otherwise, every defendant would want to go away from the suit. So, defendant cannot be left to their choice. Else, every defendant want to go away from the suit. ठीक, कंडीशन याद रखना कि दोनों में जेंडर्स की कंडीशन फुलफिल हो रही, फिर भी since it may complicate the trial or delay the trial, the court has the power to separate the trial. ठीक, अब now you move on to order 1 rule 9. See order 1 rule 9 and 13. First rule 9, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रीडिंग करना। No suit shall be defeated by reasons of the misgender or non-gender of parties, and the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interest of the parties actually before it, provided that nothing in this rule shall apply to non-gender of a necessary party. तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी सूट में मान लो A ने B पर सूट किया and C was a party but she was not joined, C was party but he was not joined, as a plaintiff आपने C को ज्वाइन नहीं किया है, and this suit was tried and decree was passed, will the decree be void only because C was not added in the case of non-gender of party? अब non-gender के दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो पार्टी was a necessary party और द पार्टी was a proper party, और फिर भी आपने उसको ज्वाइन नहीं करा। दे आर सेइंग सिर्फ इस वजह से नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टी को आपने ज्वाइन नहीं किया, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो तो यही कह रहा है कि सिर्फ इस वजह से नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टी को आपने ज्वाइन नहीं किया और सूट में डिक्री हुई है, दैट विल नॉट बी वॉइड पर सी। ठीक, तो उसी तरीके से अब मिसजेंडर का अगर आप सोचो, ए के साथ बी को ज्वाइन कर दिया अगेंस्ट सी, और नाउ बी डज नॉट क्वालिफाइज ऑर्डर 1 रूल 1, बी ऑर्डर 1 रूल 1 में कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, फिर भी ही वॉज ज्वाइंट। तो पहली बात तो कोर्ट को ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2 में, ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2 में बी का नाम स्ट्राइक ऑफ करना चाहिए था, बट द कोर्ट डिड नॉट डू दैट। द कोर्ट हर्ड द सूट एंड पास्ड द डिक्री। Will the decree be void only because a wrong party was joined? Answer is no. That is what this rule is suggesting. सिर्फ इस वजह से गलत पार्टी को ज्वाइन कर लिया था या सिर्फ इस वजह से एक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, डिक्री पर फर्क नहीं पड़ेगा, the decree will be valid. Now you see they are saying no suit shall be defeated by reason. अब no suit shall be defeated means what? The decree shall not be void. No suit shall be defeated by reason of the misgender or non-gender of the parties. Misgender means a party who does not qualify under Order 1 Rule 1 or Order 1 Rule 3. He was joined. And non-gender means a party who is a proper or necessary party but not joined. No suit shall be defeated by reason of misgender or non-gender of parties, and the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interest of the parties actually before it. मतलब जो पार्टी सूट में है उनके राइट्स और इंटरेस्ट को कौन डिसाइड करेगा। अब एक प्रॉपर पार्टी ज्वाइन नहीं हुआ, ऑब्वियसली उसका राइट डिसाइड नहीं होगा, लेकिन जो पार्टीज हैं उनके राइट डिसाइड होंगे। लेकिन ये प्रोवाइजो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू अ नॉन जेंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी। मतलब अगर नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, देन द डिग्री मे बी सेट असाइड ऑन दैट ग्राउंड। सो दे आर जस्ट क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन फॉर नेसेसरी पार्टी। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, अगर प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया देन दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोवाइजो
and therefore the decree can be set aside. I am not saying that the decree shall be. The decree can be set aside on the ground that the necessary party was not joined. अब मान लो नेसेसरी पार्टी के नॉन ज्वाइंडर से सूट के मेरिट्स गॉट अफेक्टेड. Then in section 99 the appellate court has the power to set aside the decree. अब लिख लो इस पर, write down. It is clearly declared in Order 1 Rule 9 that a mere non-joinder or misjoinder of the parties shall not affect the decree of a suit. Suit shall be defeated का मतलब decree of a suit. Non-joinder or misjoinder of parties shall not affect the decree of a suit. The court has to decide the suit on the basis of rights and interests of the parties present before it. However, if the necessary party was not joined, then Order 1 Rule 9 will not apply. Rather, as per section 99, the decree in such a case can be set aside on that ground. अब 99 पढ़ोगे आप, वहाँ मेरिट्स की बात तो नहीं है. इनफैक्ट अगर आपने नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो अपीलेट कोर्ट को पावर है कि डिक्री को सेट असाइड कर दे, क्योंकि उसके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो जाएगा. तो नेसेसरी पार्टी के नॉन ज्वाइंडर पर द डिक्री कैन बी सेट असाइड बाय द अपीलेट कोर्ट. तो आप एक बार सेक्शन 99 निकालिए. अब ऐसे हम इसको पढ़ चुके हैं एक बार एट द टाइम ऑफ क्रंसिंग वर्सेस चमन पासवान 21 में. नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड और substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal on account of any misjoinder or non-joinder of parties or causes of action or any error. मतलब पार्टीज का अगर मिसजॉइंडर या नॉन जॉइंडर है तो पर से डिक्री विल नॉट बी सेट असाइड, or any error, defect or irregularity in any proceedings in the suit not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court. So means simply they are saying कि अगर misjoinder या non-joinder of parties अगर होना है तो पर से अपीलेट कोर्ट डिक्री को सेट असाइड नहीं करेगा unless that is affecting the merits of the case. So non-joinder of the parties which will affect the merits of the case, then the appellate court will set aside the decree. Then the appellate court can set aside the decree. But proviso, if you see, provided that nothing in this section shall apply to non-joinder of necessary party, means what? Necessary party अगर ज्वाइन नहीं किया था तो appellate court के पास पावर है कि पर से वो डिक्री को सेट असाइड कर दे, and there is no need to get into whether the merits was affected or not. तो necessary parties पे ये section 99 नहीं लग रहा. Means what? If necessary parties was not joined, then the appellate court has the discretion to per se set aside the decree. But if other kind of non-joinder or misjoinder was done, then the setting aside can be done only when the merits was actually affected. But in the cases of necessary parties, the court can per se merits पर एग्जामिनेशन करे बिना भी कोर्ट चाहे तो डिक्री को सेट असाइड कर सकता है. तो बीच में शायद मैं गलत बोल गया था कि नेसेसरी पार्टीज के केस में मेरिट्स अफेक्ट होगा, तो उसको अभी करेक्ट कर रहा हूँ मैं कि नेसेसरी पार्टीज के केस में मेरिट्स एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है. नेसेसरी पार्टीज के केस में मेरिट्स एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है. कोर्ट सीधा डिग्री को सेट असाइड कर सकता है अगर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज हुआ है तो. लेकिन अगर किसी और तरीके का नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर है तो फिर जब तक मेरिट्स अफेक्टेड नहीं हुए द अपीलेट कोर्ट विल नॉट सेट असाइड द डिक्री. ठीक. So right, as per section 99, the appellate court shall not set aside the decree
merely because there was a misjoinder or non-joinder of parties. In order to set aside the decree on that ground, there has to be a proof of defeat of merits of the case. However, in the case of the non-joinder of a necessary party, Section 99 clearly declares that the above will not apply. The above rule will not apply, and therefore the appellate court may set aside the decree on the ground of non-joinder of necessary party, even if the merits of the suit have not been affected. ठीक. Now Order 1 Rule 13. Order 1 Rule 13. When the objection can be raised. It is about when the objection can be raised. Read Rule 13. All objection on the ground of non-joinder or misjoinder of parties shall be taken at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement, unless the ground of objection has subsequently arisen, and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived. So again the same thing जैसे 21 में था, ये जो ऑब्जेक्शंस हैं ये आपको सेटलमेंट ऑफ इशूज के पहले रेज करना पड़ेगा अनलेस द ग्राउंड हैज अराइजन देयर आफ्टर. अगर बाद में ग्राउंड अराइज हुआ है तो आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स करके ऐड कर लो, बट अदरवाइज यू हैव टू रेज दीज ऑब्जेक्शंस बेसिकली इन योर रिटन स्टेटमेंट, और इफ नॉट देन एटलीस्ट टिल द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इशूज. अगर आपने रेज नहीं किया देन द कोर्ट विल डीम दैट यू हैव वेव्ड दैट ग्राउंड. ठीक. अब देखो ये जो नेसेसरी पार्टीज का केस है, अब व्हाट आई विल सजेस्ट, अगर नॉर्मल केसेस हैं प्रॉपर पार्टीज वगैरह के या फिर नॉर्मल मिसजॉइंडर, तब तो दिस रूल एडहियर टू स्ट्रिक्टली. लेकिन मान लो नेसेसरी पार्टी वाज नॉट जॉइंड एंड द पार्टी कंसर्न्ड ही डिड नॉट रेज द objection till the settlement of issues. Your trial has commenced and now he raised the objection of non-joinder of necessary party, some necessary party. अब will the court disallow this application merely on the ground of 13, or is the court is free to allow the application at this stage? Is the court is free to allow the application at this stage? The court knows that if the necessary party has not been joined, then in appeal merely on that ground the decree can be set aside, means decree cannot be executable. And therefore my suggestion is that if it is a case of non-joinder of necessary parties, then Rule 13 has to be read liberally. The court will impose very heavy cost and still will allow the अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स. ठीक. तो इसको आप लिख लीजिए, बाकी एक पॉइंट तो अपने आप लिख लीजिएगा. इस पॉइंट को लिखवा रहा हूँ, राइट डाउन. डिस्पाइट whatever has been expressly provided in Order 1 Rule 13, the non-joinder of a necessary party would result into the decree becoming inexecutable, and the appellate court may set aside the decree only on the ground. Therefore, in such a case, Rule 13 has to be read liberally, and the trial court may allow such an impleadment application even if it is filed after the settlement of issues. Cost shall be imposed. तो कॉस्ट तो लगाएगा कोर्ट अगर आप डिले से लेट से एप्लीकेशन फाइल करोगे. द कॉस्ट शैल बी इम्पोज्ड. So that is a necessary party case. लेकिन proper parties में non-joinder के cases में the court will be strict, but for necessary parties the court should be liberal. Otherwise the very purpose of the decree will get defeated. तो ये जो waiver का point है वो necessary parties के case में नहीं लगना चाहिए. तो वैसे तो necessary party के लिए रूल 9 में भी प्रोवाइजो बना रखा है, सेक्शन 99 में एक प्रोवाइजो बना रखा है,
लेकिन यहाँ पर नहीं बनाया है, तो ऑब्वियसली दे आर मेकिंग अ जनरल डिक्लेरेशन, बट वी हैव टू रीड द केसेस ऑफ नेसेसरी पार्टीज इन द स्पिरिट ऑफ द प्रोवाइजोज सेक्शन 99 एंड रूल 9। ठीक, अब नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2। दिस प्रोवाइड्स यू द रेमेडी। मान लो नॉन ज्वाइंडर हुआ है, एक नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, या फिर एक केस है मिसजॉइंडर, गलत पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? वो अगर नॉन ज्वाइंडर का केस है तो उस नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन करने का ऑर्डर करेगा, नेसेसरी या प्रॉपर्टी पार्टी को ज्वाइन करने का ऑर्डर करेगा, तो उसको कहते हैं इम्प्लीडमेंट ऑर्डर। टू इम्प्लीड मीन्स ज्वाइन। इम्प्लीडमेंट ऑर्डर, IMPLEADMENT, इम्प्लीडमेंट ऑर्डर। जैसे ही ज्वाइंडर का ऑर्डर होगा दैट विल बी कॉल्ड इम्प्लीडमेंट ऑर्डर। ठीक, और जब मिसजॉइंडर का केस हो, अ पार्टी हैज टू बी रिमूव्ड, देन दैट विल बी कॉल्ड अ ऑर्डर फॉर स्ट्राइकिंग आउट अ पार्टी, द ऑर्डर फॉर स्ट्राइकिंग आउट अ पार्टी। ठीक, नॉन ज्वाइंडर इज अ केस ऑफ इम्प्लीडमेंट ऑर्डर, जहाँ पर पार्टी को ज्वाइन करते हो आप, और जहाँ पर मिसजॉइंडर वहाँ पर पार्टी को हटाते हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग आउट। ठीक, तो जब भी ज्वाइंडर का केस होगा दैट विल बी इम्प्लीडमेंट ऑर्डर, और जब मिसजॉइंडर का केस हो, पार्टी हैज टू बी रिमूव्ड, दैट विल बी कॉल्ड स्ट्राइकिंग आउट अ पार्टी, द ऑर्डर फॉर स्ट्राइकिंग आउट अ पार्टी। ठीक, नॉन ज्वाइंडर इज अ केस ऑफ इम्प्लीडमेंट ऑर्डर, जहाँ पर पार्टी को ज्वाइन करते हो आप, और जहाँ पर मिसजॉइंडर वहाँ पार्टी को हटाते हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइकिंग आउट। फाइन, the moment you put that application before the trial court will conduct the hearing, and accordingly it will pass either of these orders. Please read order 1 rule 10 sub rule 2. Order 1 rule 10 sub rule 2. The court may at any stage of proceedings, either upon or without the application of either party, suo moto भी ऑर्डर पास हो सकता है। These order can be passed suo moto also without the application। Without the application तो suo moto ही हुआ अपनी मर्जी से। The court may at any stage of the proceedings, either upon or without the application of either party, and on such terms as may appear to the court to be just, so that is imposition of the cost basically. Order that the name of any party improperly joined. What is improperly joined? Misjoinder. The name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out, means कोई misjoined party जो है उसका plaintiff और defendant whatever उसका नाम हटाया जा सकता है। plaintiff और defendant whatever उसका नाम हटाया जा सकता है। be struck out, and that the name of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, that is a proper party. Any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose, and that the name of any person who ought to have been joined. Ought to have been joined is not proper party, it is necessary party. Who ought to have been joined is a necessary party. Ought to have been joined means what? उसकी ड्यूटी थी उसको ज्वाइन करो, so that is a necessary party. Any party who ought to have been joined, that is necessary party, whether plaintiff or defendant, or whose presence before the court may be necessary, who ought to have been joined whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to educate upon and settle all the questions involved in the suit.
be added. अब this is the proper party or whose presence before the court may be necessary. This is the proper party. This is the proper party or whose presence before the court may be necessary. May be necessary. So it is a proper party in order to be enabled. So here it is ought to have been joined. जरूरी था कि join करना. Or it is may be necessary. Whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit be added. ठीक. So they are basically talking about यहाँ misjoinder है, वहाँ misjoinder कैसे होगा? अगर plaintiff है order 1 rule 1 follow नहीं हो रहा तो misjoinder है. Similarly for defendants rule 3, तो misjoin the party plaintiff या defendant हो तो उसको striking out का order होगा. और अगर एक पार्टी प्रॉपर है या नेसेसरी है, ought to have been joined is necessary. तो एक पार्टी नेसेसरी है या प्रॉपर है, ought to have been joined is necessary. और बाद में जो लिखा है necessary in order to able to court effectually decide, that is proper. Why? Because may be necessary. It is may be necessary. तो अगर प्रॉपर पार्टी हो या नेसेसरी पार्टी हो द कोर्ट में ऑर्डर द joinder, that is the impediment of the such a party, the impediment of such a party, and this order can be passed at any stage, and the purpose is what? To have the suit completely and comprehensively decided. ठीक ठीक. अब ये बना लो आप. नॉन जॉइंडर के केस में इट कैन बी प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी, और दोनों केसेस में द कोर्ट विल ऑर्डर ऑफ व्हाट? द इम्प्लीडमेंट मीन्स जॉइंडर, टू जॉइन, टू ऐड. और इधर क्या था? मिसजॉइंडर इज अ केस ऑफ strike out of the party, that is the party will be removed from the suit, striking out of the party. अब ट्रांसपोजिशन क्या होगा? कि एक जगह से उसको स्ट्राइक आउट करो और दूसरी जगह उसको ऐड करो. अब जैसे मान लो इट वाज लाइक दिस, A वर्सेस B एंड C. जब मान लो कोर्ट ने इधर से C को स्ट्रक कर दिया और C has joined with A, या फिर A और C थे तो A की जगह से उधर C को स्ट्रक कर दिया और B की जगह ज्वाइन कर दिया. So this is the striking of the party from one place, either from the plaintiff or defendant, and joining with other. This is what is called transposition. तो ट्रांसपोजिशन में दो चीज होती हैं कि एक तरफ से पार्टी को स्ट्राइक आउट करते हैं और दूसरी तरफ पार्टी को इम्प्लीड कर देते हैं. That is what is called transposition. That is what is called the transposition of the party, shifting of the party from one position to other. अब देखो यहाँ पर they are saying that court at any stage of proceeding can do that. At any stage court can do that. और जबकि ऑर्डर 1 रूल 13 में प्रोवाइड कर रहे हैं सेटलमेंट ऑफ इशूज के पहले या उस समय तक. तो अगर पार्टी एप्लीकेशन डालता है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगा ऑर्डर 1 रूल 13 में, बिकॉज यू हैव टू गिव मीनिंग टू दैट ऑल्सो. बिकॉज रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? अगर रेस्ट्रिक्टेड प्रोविजन है तो उसको मीनिंग देना पड़ेगा. सो इफ अ पार्टी पुट्स एन एप्लीकेशन, then you have to stick to order 1 rule 13, but not in the case of necessary parties. और अगर कोर्ट सुओ मोटो करता है then at that power the court had at any stage. ठीक. और नेसेसरी पार्टीज के केस में ऑर्डर 1 रूल 13 में नहीं जाओगे. एप्लीकेशन हो या सुओ मोटो हो, द कोर्ट कैन डू एट एनी स्टेज, क्योंकि सुओ मोटो भी कर सकता है कोर्ट ऑर्डर 1 रूल 10 में.
ठीक। नाउ सी ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 1 rule 10 sub rule 1 it is basically a case of misdescription of parties। अब बताइए what could be the meaning of misdescription। अब misdescription means to describe wrongly। मान लो किसी पार्टी का नाम आपने गलत लिख दिया या किसी पार्टी को आपने गलत डिस्क्राइब कर दिया, that is what is called misdescription। Where a suit has been instituted in the name of the wrong person as plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of the right plaintiff। मतलब plaintiff का नाम गलत है या फिर सही plaintiff ने फाइल किया है कि नहीं, there is a doubt on that। Where a suit has been instituted in the name of wrong person as plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of right plaintiff, the court may at any stage of the suit, if satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake। मतलब सूट के किसी भी स्टेज पर अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए that there was a bona fide mistake and that it is necessary for the determination of the real matter in dispute, so to do, order any other person to be substituted or added as plaintiff upon such terms as the court thinks just। अब यहाँ पर they are saying wrong description में अगर plaintiff का नाम गलत है या फिर गलत plaintiff के थ्रू सूट फाइल हुआ है तो कोर्ट को किसी भी स्टेज पर पावर है एप्लीकेशन पर या सुओ मोटो that it can make the necessary correction and add the correct plaintiff to the suit। मीन्स गलत plaintiff को हटाकर उसकी जगह पर सही plaintiff को ऐड किया जा सकता है। ठीक, एक बार फिर पढ़ लो आप। Where a suit has been instituted in the name of the wrong person as plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of right plaintiff, the court may at any stage of the suit, if satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake and that it is necessary for the determination of the real matter in dispute, so to do, order any other person to be substituted or added as plaintiff upon such terms as the court thinks just। अब देखो इसमें कोर्ट एक्चुअली क्या करती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रूल 1 सब रूल 1 ऑफ रूल 10। दे आर सेइंग द वेयर अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ रॉन्ग पर्सन एज a plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of right plaintiff, then the court can pass the order of substitution। सही plaintiff को उसकी जगह पर डाल देंगे। ठीक, जो रॉन्ग प्लेंटिफ है उसकी जगह पे डाल देना। अब ये जो है ये तो ऑलरेडी ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2 में कवर्ड है। अगर एक गलत व्यक्ति का नाम जोड़ दिया है तो उसका नाम हटाकर दूसरा प्लेंटिफ ऐड हो जाएगा, प्रॉपर प्लेंटिफ। और अगर एक प्लेंटिफ का नाम नहीं जोड़ा है तो उसको कोर्ट ऑर्डर से ज्वाइन कर देगा। सो इट इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर sub rule 2। any kind of correction which is already covered in sub rule 2, any kind of correction with respect to the plaintiff or defendant is already covered in sub rule 2। then what could be the purpose of sub rule 1? And mind you, sub rule 1 is not talking about the defendant, it only talks about the plaintiff। and a wrong plaintiff, a suit has been filed by a wrong plaintiff or in the name of wrong plaintiff। तो यहाँ पर डिफेंडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो therefore my question is कि सब रूल 2 में जब वो प्लेंटिफ को रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, स्ट्राइक आउट, एडिशन, इन सब की बात जब ऑलरेडी कर चुके हैं, देन व्हाट इज देयर इन सब रूल 1। तो सब रूल 2 में जब प्लेंटिफ के लिए सब बनाई दिया है, सब कुछ लिखा है, तो सब रूल 1 में वो प्लेंटिफ के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये दो प्रोविजन सेम तो होगा नहीं। अब देखो अगर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है तो आप वैसे भी करेक्ट कर सकते हो।
अगर टाइटल का मिस्टेक है तो आप वैसे भी करेक्ट कर सकते हो। अब कुछ सूट्स हैं जो कि बहुत पेक्यूलियर सूट्स हैं। अब जैसे किसी फर्म को सूट करना है किसी के ऊपर, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि द नेम ऑफ द फर्म, सपोज द नेम ऑफ द फर्म इज XYZ, so it is not like that XYZ versus X या versus A, XYZ versus A, so it is not like that कि firm name versus X, so you never be like that, but the requirement is that कि जो फर्म है उसके प्रोप्राइटर का नाम पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर आना चाहिए, मान लो प्रोप्राइटर का नाम है राहुल, तो राहुल कॉमा प्रोप्राइटर राहुल IAS वर्सेस X। अब मान लो आपने सिर्फ राहुल IAS वर्सेस X कर दिया, तो यहाँ पर वो जो प्रोप्राइटर का नाम है वो लिखना जरूरी है, तो राहुल का नाम यहाँ पर साथ में ऐड होना चाहिए। अब मान लो एक कंपनी सूट करती है किसी पर, तो सिर्फ कंपनी के नाम से काम नहीं चलेगा, एक्स कंपनी, वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम होगा मिस्टर एनी नेम, मिस्टर ए मान लो, मिस्टर ए कॉमा मैनेजिंग डायरेक्टर सो एंड सो कंपनी वर्सेस X। So here if the managing director name is not written, so that name will be added. So here the managing director name was not written, that name will be added. So this is what is called the misdescription of the party. अब जैसे मान लो गवर्नमेंट को सूट करना है, तो गवर्नमेंट का सेक्रेटरी होम अफेयर्स, फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, वॉटएवर, एंड देन वर्सेस बी या X, ऐसे होगा। तो इस तरीके की कोई फॉर्मेलिटीज हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। अब जैसे पार्टनरशिप फर्म है और आपने पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखकर सूट कर दिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन एंड हिज डेजिग्नेशन। सिमिलरली जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई पर्सन है वो करता है, तो नेम ऑफ दैट पर्सन A, देन कर्ता ऑफ द फैमिली वर्सेस सो XYZ, देन द सूट हैज टू बी फाइल्ड। तो ये जो टेक्निकल नाम है, कर्ता का नाम, प्रोप्राइटर का नाम, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम, एक्सेट्रा, सेक्रेटरी का नाम, ये जो नाम है, इफ दे आर नॉट एडेड इन द सूट, देयर इज दीज नेम्स along with the name of the firm, company, etc. So that is where it will be considered that the plaintiff is wrongly described. तो plaintiff का गलत डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि plaintiff सिर्फ फर्म का नाम नहीं हो सकता, plaintiff सिर्फ कंपनी का नाम नहीं हो सकता, plaintiff सिर्फ एक डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती, या स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट नहीं हो सकती, कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं हो सकता, उनका नाम भी होना चाहिए। तो इट शुड बी लाइक दिस, द नेम ऑफ द पर्सन, हिज डेजिग्नेशन, एंड देन नेम ऑफ द फर्म और कंपनी, देन नेम ऑफ द पर्सन, इट्स डेजिग्नेशन, देन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इफ एनी ऑफ दिस इज नॉट रिटन, देन it should be written in clause 1. So the purpose of clause 1 is to look upon these kind of technical matters. Now suppose someone is filing a suit against a firm, then suits should not be like that A versus firm X. It should be A versus name of the firm, name of the person, proprietor, A versus name of the person, his designation, proprietor, and then firm name. तो ये जो डिफेंडेंट के नाम में जो मिस डिस्क्रिप्शन है वो भी करेक्ट होगा, बट वो रूल 1 में नहीं होगा, क्योंकि रूल 1 में सिर्फ प्लेंटिफ के नेम के करेक्शन की बात हो रही है, डिफेंडेंट के करेक्शन की बात रूल 1 में नहीं है। और रूल 2 में ये फॉल करेगा नहीं, क्योंकि रूल 2 में अलग से पार्टी ऐड करते हो आप, तो अगर डिफेंडेंट के नाम में अगर मिस्टेक है तो उसका करेक्शन होगा
ऑर्डर 6 रूल 17 में, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। लेकिन अगर प्लेंटिफ के नाम में अगर मिस्टेक है, करेक्शन विल बी डन हियर अंडर सब रूल 1। अब इसमें आप लिख लीजिए, राइट डाउन ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 1, राइट। Order 1 Rule 10 Sub Rule 1 refers only to a plaintiff and provides for the cases where the plaintiff has been wrongly described or where the suit has been filed in the name of wrong plaintiff. It is provided that the court may at any stage make the correction by adding a person as a plaintiff or substituting a person in the place of the plaintiff, or substituting a person in the name of in the place of the plaintiff. The above provision is not referring to a mere mistake in the spelling etc. of the plaintiff. Rather, mistake in the spelling etc. of the plaintiff, not referring a mere mistake in the spelling etc. of the plaintiff, rather it deals with a situation of misdescription. Of plaintiff, wherein a particular suit there has to be specific description of the plaintiff. Wherein a particular suit there has to be a specific description of the plaintiff, and the plaintiff has not been described in that manner. For example, for instance, यहाँ पे जरूरी है a particular suit has there to be specific description, that there has to be a specific description of the plaintiff, but the plaintiff has not been described in that manner. For example, for instance, if the plaintiff is a proprietorship firm, then the mere name of the firm is not sufficient. Rather, the name of the proprietor also has to be added. Similarly, if the plaintiff is a joint family, the name of the karta has to be added. In case of company, the name of the managing director has to be added. In the case of government, name of the Secretary Home Affairs has to be added. Thus, if the court finds that the above description is not proper, then it may add the said persons or do the substitution in order to do the necessary correction. ठीक, तो मान लो एक जॉइंट फैमिली है और उस जॉइंट फैमिली का नाम लिखकर, और दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, जैसे मान लो कोई जॉइंट फैमिली है और अब उस जॉइंट फैमिली का नाम लिखकर सूट कर दिया किसी के खिलाफ, सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन. देयर हैज टू बी द नेम ऑफ एक्स द कर्ता, तो लिखा होगा एक्स कर्ता देन जॉइंट हिंदू फैमिली, एंड इफ यू हैव नॉट रिटन दीज names, then you have to add these names in the plaint. इसी तरीके से अगर कंपनी की तरफ से करोगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम ऐड होगा, एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सो कंपनी. अब मान लो कर्ता का नाम ना लिखकर किसी को पार्टनर वाई का नाम लिख दिया था, तो वाई को हटाकर एक्स द कर्ता ऐड होगा. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन. जब कंपनी का सूट किया है और उसमें आपने किसी मेंबर का नाम लिख दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी मेंबर का, तो उसमें उसको हटाकर मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम लिखा जाएगा. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. और अगर नाम कुछ भी नहीं लिखा है, देन यू ऐड दैट नेम. अगर नाम कुछ भी नहीं लिखा है, देन यू ऐड दैट नेम एंड दैट इज कॉल्ड एडिशन. अब दिस इज नॉट रिलेटेड टू ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2, बिकॉज रूल 2 में there is a correction regarding gender and non-gender, and here it is about making the correction and description of the plaintiff.
तो इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए, राइट डाउन। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 1 and sub rule 2 lies in the fact that in sub rule 1 it is not about making the corrections with respect to a situation of misgender or non-gender. Rather, it is about wrong description of the plaintiff, wherein the plaintiff's description has to be corrected. On the other hand, in order 1 rule 10 sub rule 2, the error is that either a necessary or proper parties has not been joined or a party was not qualified for the gender has been joined, or a party was not qualified for the gender has been joined. In such a case, the court will pass either an order of striking out or an order of impediment. Impediment means what? Adding a party. Impediment means adding a party. Now what sub rule 2 is, suppose a person A has filed a suit against B and C was a necessary and proper party who ought to have been added as a defendant, but he has not been added. So the court will pass an order of joining C. तो यहाँ पर आप एक नए व्यक्ति को आप एक और व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हो। यहाँ पर misdescription का सिचुएशन नहीं है। There is not an error of the description of the party. Here a party has to be joined, but you have not joined him. So that is where the suit becomes A versus B and C. So C has been impleaded. Take, but the other situation can be that A and D has joined against B, but the court finds that the D was not the party who is qualified under order 1 rule 1, so he should not have been joined here. So his name has to be struck out. उसका नाम हटा दिया जाएगा and the suit will become A versus B. So this is sub rule 2. या फिर a party A has filed a suit against B and C and it is found that C was qualified to be a plaintiff and not a defendant. You can say he is a pro forma defendant and therefore C can be struck out from here. तो उसे यहाँ से हटा दो and C will be joined here. So this is the case of striking out and plus addition. So that is what is called transposition. ठीक, तो इन cases में the situation is the mistake, the error is that of not gender of non-gender और misgender. तो उसका जो करेक्शन है जिसमें एक पार्टी ऐड होगा या सब्स्टिट्यूट होगा, या फिर जैसे मान लो सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी पर सूट किया, बी और सी पर सूट किया, ए ने बी और सी पर सूट किया, बट इट वाज फाउंड दैट सी इज नॉट द पार्टी क्वालिफाइड अंडर ऑर्डर 1 रूल 3, बट देयर इज अ डी हु इज नेसेसरी पार्टी एज डिफेंडेंट. So the court will strike out the name of the C and put D as a defendant. तो ये क्या हो गया, C को D ने substitute कर दिया. C has been substituted by D and therefore the suit now becomes A versus B and D. So this is the case where D substituted the C. So this is the case where D substituted C. So you can add a party, you can substitute a party, you can strike out a party, all that. तो striking out कब करोगे, जब misgender है, और addition कब करोगे, जब non-gender है. misgender में striking out और non-gender में addition. So that entire process will be done under order 1 rule 10 sub rule 2. The order 1 rule 10 sub rule 1 does not have that thing. It is only about the misdescription of a plaintiff. Misdescription of a plaintiff. Plaintiff का description एक particular form में होना चाहिए था.
प्लेंटिफ का डिस्क्रिप्शन एक पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए था, एंड विच हैज बीन नॉट डन, एंड देयरफॉर यू हैड गॉन फॉर अ and therefore you had go on to made a necessary correction. ठीक, is that fine? अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, राइट डाउन. In order 1 rule 10 sub rule 1 the situation of misdescription of defendant is not provided. However, there can be such a situation and the correction may be required. However, there can be such a situation and the correction may be required. अब जैसे मान लो ए ने एक जॉइंट फैमिली के ऊपर सूट किया और उसने सिर्फ JHF लिख दिया, जॉइंट हिंदू फैमिली लिख दिया, उससे काम नहीं चलेगा. ए हैज टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स करता देन जॉइंट हिंदू फैमिली, एक्स करता द जॉइंट हिंदू फैमिली, और कंपनी के ऊपर करोगे तो ए वर्सेस एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर, नेम ऑफ द कंपनी. So that description is required. That description is required even in the case of defendant. But the sub rule 1 is silent about it. तो सब रूल 1 साइलेंट है, तो करेक्शन कहाँ करोगे आप? अब एक तो प्रोविजन उस केस में आपके पास है, the court will make a correction under section 151 in the inherent powers. तो inherent powers कब लागू करोगे? When there is no provision. इनहेरेंट पावर आप तब लागू करोगे, तब अप्लाई करोगे जब कोई और प्रोविजन नहीं होगा. इनहेरेंट पावर अप्लाइज ओनली व्हेन देयर इज नो अदर प्रोविजन. एंड ऑर्डर 6 रूल 17 दैट इज अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इज सफिशिएंट इनफ प्रोविजन वेयर इन द करेक्शन कैन बी डन. द कोर्ट कैन ऑल्सो डायरेक्ट द पार्टी टू मेक द करेक्शन, मेक द अमेंडमेंट अंडर ऑर्डर 6 रूल 17, or the party himself can make the application for the amendment. तो इस सिचुएशन में क्योंकि ऑर्डर 6 रूल 17 है, तो सेक्शन 151 will not be required. तो इसको लिख लीजिए आप, राइट डाउन. द करेक्शन टू द मिसजेंडर, द करेक्शन टू द the correction to the misdescription, the correction to the misdescription of defendant cannot be done under order 1 rule 10 sub rule 1. However, a party can make the amendment of pleading under order 6 rule 17 to make the necessary correction. Even the court may require to make the necessary correction. Even the court may require a party to make the said amendment. Next sentence. Since Order 6 Rule 17 caters to that situation, there is no need to apply inherent powers under section 151. Since Order 6 Rule 17 caters to that situation, there is no need to apply या invoke inherent powers under section 151. I said no need, जरूरत नहीं है. The correction to the misdescription of defendant cannot be done under order 1 rule 10 sub rule 1. However, a party can make the amendment of pleadings under order 6 rule 17 to make the necessary correction. Even the court may require a party to make the said amendment. Full stop. Since order 6 rule 17 caters to that situation, there is no need to apply inherent powers under section 151. ठीक, अब आप निकालिए ऑर्डर 1 रूल 10 फिर से. अब इसमें पहला हो गया, दूसरा पढ़ लिया, अब तीसरा निकालिए. No person shall be added as plaintiff suing without a next friend or as the next friend of a plaintiff under any disability without his consent. Now here what they are talking about, that suppose A has filed a suit against B. Now suppose A is under some disability. Disability means what? A be minor, maybe A is minor, or maybe he is unsound,
अब ये सूट नहीं चल सकता। You read order 32. This suit cannot continue. There has to be a next friend, a guardian, who will be called a next friend. तो आपको एक next friend को ऐड करना पड़ेगा। अगर next friend ऐड नहीं हुआ, this suit cannot be continued. If the next friend has not been added, this suit cannot be continued, and therefore some C has to be added as a next friend. Some C has to be added as next friend. So they are referring that only, that if a suit is filed by a minor or unsound person and there is no next friend, then the court has to add the next friend. और दूसरा ये कह रहे हैं, ठीक, तो दूसरी सिचुएशन क्या है इसमें? दूसरा ये कह रहे हैं कि सपोज that there was a suit between A and B and A is not a minor, A is not a minor or unsound, लेकिन कोई एक C है जो कि necessary party है। There is some C who is a necessary party and C is a minor, लेकिन वो necessary party है। और अब C को ऐड करना है and C is the minor or unsound and he is a necessary party, he has to be added. So what they are saying is that no person shall be added. No person under disability shall be added without a next friend. So when you add C, तो C का जो next friend होगा, suppose X is the next friend, तो उसको भी आपको साथ में ऐड करना पड़ेगा। If the suit was A versus B, तो C भी A के साथ ऐड हो जाएगा through his next friend. Now his next friend is the guardian of the plaintiff here, plaintiff C. So that is what they are saying. ये ऑर्डर 32 से रिलेटेड मैटर है कि अगर किसी माइनर या अनसाउंड पर्सन ने सूट कर दिया है और उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है, तो आपको नेक्स्ट फ्रेंड ऐड करना पड़ेगा। और अगर किसी माइनर या अनसाउंड पर्सन को आपको ऐड करना है किसी सूट में एज अ नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी, तो बिना नेक्स्ट फ्रेंड के आप उसको ऐड नहीं करोगे। यू हैव टू टेक अलोंग द नेक्स्ट फ्रेंड एंड देन ओनली यू विल add the person to the suit. ठीक, so they are saying no person shall be added as a plaintiff suing without a next friend or as the next friend of a plaintiff under any disability without his consent. ठीक, तो दूसरी बात ये कह रहे हैं जब भी आप नेक्स्ट फ्रेंड ऐड करोगे तो नेक्स्ट फ्रेंड का कंसेंट लोगे। पहली चीज तो ये कह रहे हैं, फर्स्ट थिंग दे आर सेइंग दैट इफ यू आर एडिंग अ पर्सन, पहली चीज ये है दैट इज इम्प्लिसिट दैट इफ ए इज अ माइनर, तो उसका आप एक नेक्स्ट फ्रेंड ऐड करोगे। और जब ये नेक्स्ट फ्रेंड ऐड होगा तो उसका आपका कंसेंट लेना पड़ेगा। विदाउट द कंसेंट यू कैन नॉट ऐड द नेक्स्ट फ्रेंड बिकॉज यू आर एडिंग दैट पर्सन टू कंटेस्ट द सूट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर और अनसाउंड। तो उसके कंसेंट के बिना आप कैसे ऐड कर लोगे इसको? सो वेन एवर यू ऐड अ पर्सन एज नेक्स्ट फ्रेंड, you have to take his consent. And the second thing they have said is that if there is a suit between A and B and a minor, suppose a minor C has to be added as a plaintiff, तो minor या unsound है तो अकेले आप उसको ऐड नहीं करोगे, उसके साथ उसका नेक्स्ट फ्रेंड भी ऐड होगा और नेक्स्ट फ्रेंड का हमेशा आप कंसेंट लोगे। यू हैव टू टेक कंसेंट of the next friend. Is that fine? Now next one, fourth clause, where a defendant is added, the plaintiff shall, unless the court otherwise directs, be amended in such manner as may be necessary, and amended copies of the summons and of the plaintiff shall be served on the new defendant, and if the court thinks fit, on the original defendant. What they are saying here is, there is a suit between A and B. There is a suit between A and B, and a person C has been added as a co-defendant. C को ऐड कर दिया। अब जब आप C को ऐड करोगे तो ओरिजिनल जो प्लेंट था तो उसमें क्या लिखा था ऊपर टाइटल में? A son of so and so versus B। अब आपको उसको अमेंड करना पड़ेगा।
इधर नंबर 2 में उसको C डालना पड़ेगा उधर। तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि जब भी आप डिफेंडेंट को ऐड करोगे तो आपको ओरिजिनल प्लेंट को अमेंड करना पड़ेगा, और जो एडेड डिफेंडेंट हैं उनको अमेंडेड प्लेंट का संबंध देना पड़ेगा। जो एडेड डिफेंडेंट हैं उसको अमेंडेड प्लेंट का संबंध देना पड़ेगा। सो द सम्मन शुड कंटेन हिज नेम, क्योंकि जब तक प्लेंट में उसका नाम नहीं होगा देन हाउ विल यू सर्व द सम्मन। तो पहले आप प्लेंट को अमेंड करो, उसका नाम ऐड करो, एंड देन यू गिव हिम द सम्मन्स, एंड दैट सम्मन्स इफ नीडेड। ये जो ओरिजिनल प्लेंटिफ ए था, सॉरी ये जो ओरिजिनल डिफेंडेंट बी था उसको भी दिया जा सकता है इफ द कोर्ट डीम्स फिट, क्योंकि बी को तो सम्मन जा चुका है पहले। ए वर्सेस बी का सम्मन हैज सेंट टू बी, बट व्हेन यू ऐड अ पार्टी सो द कॉपी ऑफ द अमेंडेड प्लेंट इफ अ न्यू पार्टी हैज बीन एडेड, उसका सम्मन जाएगा टू द न्यू डिफेंडेंट, एंड इफ द कोर्ट डीम्स नेसेसरी तो जो ओल्ड डिफेंडेंट है उसको भी सेम कॉपी हैज बीन सेंड अगेन, so that he has been aware as to so and so party has been added. ठीक, these are all technical matters where no interpretation is as such. Read it again. Read it. Where a defendant is added, the plaintiff shall, unless the court otherwise directs, be amended in such manner as may be necessary, and amended copies of the summons and of the plaint shall be served on the new defendant, and if the court thinks fit on the original defendant. So that is a simple thing कि अगर if you add a defendant तो उस प्लेंट को अमेंड करोगे, और जो अमेंडेड प्लेंट की कॉपी जिसमें उसका भी नाम होना चाहिए डिफेंडेंट का दूसरा जो ज्वाइन किया है, और उस न्यू प्लेंट का सम्मन दोगे आप न्यू डिफेंडेंट को, और ज़रूरत पड़े तो पुराने डिफेंडेंट को भी सर्व कराओगे, सो दैट ही नो एग्जैक्टली हु एज द पार्टी हैज बीन एडेड। ठीक, उसी तरीके से तीसरे में भी कोई अगर माइनर या अनसाउंड है तो उसके साथ नेक्स्ट फ्रेंड को ऐड करोगे। नाउ सी द क्लाउज 5। अब ये फिफ्थ क्लाउज हमेशा सेक्शन 21 लिमिटेशन एक्ट के साथ पढ़ा जाएगा। Fifth clause will be read with section 21 of Limitation Act. Subject to the provisions of Indian Limitation Act 1877 section 20. इस एक्ट के section 22, but for the new act of Limitation Act it is section 21. New Limitation Act it is 21. पुराने वाले लॉ में it was section 22, but now it is 21. Subject to the provisions of the Indian Limitation Act, Section 21, the proceedings as against any person added as defendant shall be deemed to have begun only on the service of the summons. मतलब they are saying subject to the Limitation Act. So whatever there in the Limitation Act, when you will see limitation, what they are saying is, मान लो ए का cause of action इस डेट को अराइज हुआ, जब यहाँ पे हम थोड़ा हिंट में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में सेक्शन 21 लिमिटेशन एक्ट नहीं देखेंगे, पूरा डिस्कस नहीं करेंगे इसको अभी, ये पूरा डिस्कस होगा जब लिमिटेशन एक्ट अलग पढ़ेंगे हम। ठीक, तो मान लो ए का कॉज ऑफ एक्शन इधर अराइज हुआ, एंड समवेयर हेयर इट इज प्रिस्क्राइब पीरियड, मतलब इस डेट पे आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। ऑन दैट डेट द लिमिटेशन पीरियड विल लैप्स फॉर द पर्टिकुलर सूट। So here on this date, A file a suit against B. Take A file a suit against B. If thereafter the suit is going on, somewhere here the application for impediment, of C was filed. The application for impediment of C. अब उसके बाद कोर्ट ने हियरिंग की, और हियरिंग के बाद द कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट सी हैज टू बी एडेड, और फिर उसके बाद कोर्ट ने सी को
समन इशू किया, and this is the date where the summons received by C. Now what this clause is saying is subject to the provisions of the Indian Limitation Act. Limitation Acts. The proceeding as against any person added as defendant shall be deemed to have begun only on the service of the summons. मतलब जो नया डिफेंडेंट है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स किस दिन माना जाएगा कि शुरू हुआ, जिस दिन उसको सम्मन सर्व हुआ। अब इस एग्जाम्पल में जो सम्मन सर्व हुआ है वो कब हुआ है, प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपने इस डेट पर सम्मन सर्व करवाया, एंड एज पर क्लॉज 5 हियर the proceedings against C will be deemed have to be started on the date of the service of summons, means the proceedings has been started here, and when the proceedings has been started the prescribed period is lapsed, and therefore the C can always raise the objection that the suit against me has been barred by limitation. C can always raise the objection कि मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग्स आज से शुरू हुआ और आज के डेट पर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑलरेडी लैप्स कर चुका है। So when the prescribed period is already lapsed and then you started the proceedings, so the suit is barred by the limitation. Suit is barred by limitation with respect to me. So C can always raise the objection of bar of limitation, but the Limitation Act of Section 21 says that if the applicant can prove that due to the bona fide mistake in good faith he will not get C pleaded earlier, and if the court may deem, then the court may deem that this person was added in the party on the original date when the suit was filed. एक कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है सेक्शन 21 क्लाउज 1 का प्रोवाइजो इन लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 21 क्लाउज 1 प्रोवाइजो इन लिमिटेशन एक्ट that if the bona fide good faith etc are proved, then the added defendant can be deemed by the court to have been added on the day when the suit was originally filed. So the bar of limitation can be removed by that person. So that is how we read the section 21. So that is how it is linked with section 21. अब इस क्लास में सिर्फ इतना प्रोवाइडेड है कि जिस दिन डिफेंडेंट को सम्मन सर्व हुआ है उस दिन से उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड माने जाएंगे, मतलब उसके खिलाफ सूट किया माना जाएगा। अब अगर आपने उसको सम्मन सर्व किया है लिमिटेशन पीरियड लैप्स होने के बाद, तो वो हमेशा ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि मेरे खिलाफ आपने प्रोसीडिंग्स आज शुरू किया लेकिन आज लिमिटेशन पीरियड लैप्स हो चुका है, and therefore against me the suit is barred by limitation, and therefore the suit against me is barred by limitation, and on that plea you can avoid the suit. And the court under section 21 clause 1 proviso of the Limitation Act has the power that if the applicant proves that I could not raise the impediment application earlier because of bona fide mistake in good faith, then the court may be that the defendant was added when the suit was actually instituted filed. तो इसको रिलेट बैक करके माना जाएगा कि सी को भी इस दिन ऐड किया गया था, एंड therefore the bar of limitation can be avoided. ठीक, so this is what I will discuss in the details in Limitation Act. ठीक, बट इस क्लाउज में आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इसको पार्टी उस दिन माना जाएगा, प्रोसीडिंग्स उस दिन माना जाएगा जिस दिन उसको सम्मन्स सर्व हुआ। ठीक, सो
That's it for this topic in this lecture. Thank you.